देखो, आज हम आए हैं शहीद नानक सिंह फाउंडेशन के संबंध में। हमने एक कार्यक्रम किया है जिसमें हमने इंडिया के भूतपूर्व एम्बेसडर को बुलाया, उनसे पूछा कि यूएस और इंडिया की जो रिलेशनशिप है कैसे आगे बढ़ सकता है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि जो रिलेशनशिप बढ़ेगा जब कॉमन इंटरेस्ट हो गए, तो कहने का मतलब है कि जब इंडिया की इकॉनमी ऊपर होगी, मार्केट बढ़ेगी, उनको यहाँ फ़ायदा नज़र आएगा तो फिर प्यार करते हैं। व्हेन यू आर एन एसेट, जब कोई दोस्त आपका एसेट होता है उससे आप दोस्ती करते हो। जिस दिन वो लाइबिलिटी बन जाता है उसको धक्के मार के निकाल देते हो। माँ बाप भी अपने बच्चे को निकाल के देखते हैं। तो जब तक इंडिया एसेट रहेगा वर्ल्ड में, जैसे पाकिस्तान तो देख लिया ना, कोई जाता नहीं वहाँ पैसा लगाने के लिए, है जी। तो इसलिए वो पाकिस्तानी भी नहीं लगाते वहाँ, वो बांग्लादेश जाते। सो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि हमने हमारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो हमारी वैल्यू है वासुदेवा कुटुंबकम, हम दुनिया को एक जानते हैं। ये हमारे, हम जहाँ भी जाते हैं, हमारा जो डायस्पोरा है 40 मिलियन का, वो जाके एक बहुत किरदार कर रहा है। वो एम्बेसडर है इंडिया के, उनके साथ काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं। वो बताते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। पहले लोगों को पता नहीं था, अभी इतनी रेपुटेशन हो गई इंडिया की बिकॉज ऑफ हम वैल्यू। वी आर द नंबर 1 डायस्पोरा, मोस्ट सक्सेसफुल। हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमपी भेज रहे हैं। बिजनेसमैन नंबर 1, रिचेस्ट पीपल इन इंडियन। सो हमारा जो इमेज था इंडिपेंडेंस से अब तक यू टर्न 190 डिग्री चेंज हो गया। अभी इंडियन के पीछे भागते हैं और हर इंडस्ट्री इंडिया में आ रही है। दुनिया की कारों की ला लो, आईटी की ला लो, टेलीफोन की ला लो, कोई फार्मास्यूटिकल, बिकॉज ऑफ द मार्केट इंडिया ऑफर, स्टेबिलिटी इंडिया ऑफर। देयर इज नो डेंजर ऑफ एनी कू और मिलिट्री टेक ओवर इन इंडिया। इज ए स्टेबल डेमोक्रेसी। उनको पता लग गया कि यहाँ रखना पैसा सेफ है, यहाँ फ्रीडम है। हम किसी को अपने धर्म का डंडा नहीं मारते, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये कर, फ्रीडम है। जो कंट्री में सिटीज़न फ्री हैं उनको सोचने की भी शक्ति है। जिसको सुबह से शाम तक आइदर रिलीजन और स्टेट सुप्रेस करके रखती है, वो कभी डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है। सो देयरफॉर जो हमारी कंट्री के जो हमारे नेता थे, उन्होंने हमें सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इक्वालिटी दे दी। उनका तो कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। औरत तो जो है वो आर्किटेक्ट है। मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड, आपको पता है मेरे फादर को तो शहीद कर दिया था। मेरी तो माँ ने पैदा किया, मैंने बाप देखा ही नहीं। अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी ना होती, मैं अभी किसी यतीम खाने में होता। ये माँ की शक्ति थी, उसने 8 बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचा दिए। और मैं खड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वीन से ऑनर मैंने लिए यूके में, ये भारत माँ की आशीर्वाद से। सो मैं बताना चाहता हूँ, जो औरत जिसने बच्चों को, आर्किटेक्ट होता है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। जिस माँ को कुछ नहीं पता उसने बच्चे को क्या बताना है। ये औरत को पीछे रखने वाले कभी आगे जा नहीं सकते, मुझे बताओ। सो इसलिए आप हमारी जो देवियों की हम करते हैं, बहनों की इज्जत करते हैं, माँ की इज्जत करते हैं, बहन। तो औरत को इक्वालिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी फ्रॉम डे 1, रिलीजियस को डे 1। तो ये डिफरेंस है एक। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो लीडर थे, उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त संविधान दे दिया है। अगर कोई पीछे रह गया तो गलती उसकी है, संविधान की नहीं। ठीक है, सबको एक करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो लंदन के पार्लियामेंट मेंबर हैं लॉर्ड रमी रंजन जी, उनके फादर साहब की याद में आज ये कार्यक्रम रखा। और शहीद नानक सिंह जी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, जिस टाइम पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम जब राइट हो रहे थे, तब उन्होंने अपनी जान दी सिर्फ इसलिए कि जो ये पार्टीशन की बुनियाद गलत है, उस को रोकने के लिए उन्होंने
एक ऐसे मोब में जहाँ बच्चों पर अटैक हो रहा था, उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दी और बहुत महान कार्य किया उन्होंने। हिंदू जो हमारे पाकिस्तान से आ रहे थे उनके प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने वहाँ पर बहुत एजिटेशन किए। उन्होंने उनको बचाने के लिए अपने प्राण भी दे दी, क्योंकि वहाँ सब बच्चे जो थे जो जिन पर अटैक हो रहा था वो हिंदू कम्युनिटी के थे। To come here, and I thank the organizers for the Shaheed Nanak Singh Foundation who put forward such an amazing program. He was my father-in-law, and he was a visionary, and he, as my husband said, could foretell the consequences of religious disharmony. And he always said that India's diversity is like the colors of a rainbow, and together we shine, and that is the message that has been coming through all these years. And I can just say that I'm spellbound, and that the function's gone really well, incredibly well. मैं DK त्यागी, इंटरनेशनल सेक्रेटरी हूँ NRI एसोसिएशन है UK की। जो 4-5 कंट्री हम देखते हैं वहाँ पे जो NRI की प्रॉब्लम होते हैं वो हम सोल्व करते हैं। हमारे जो लॉर्ड रमी जी हैं, मैं उनके साथ ही आया हूँ 2 दिन पहले। तो ये जो शहीद नानक है, जो लॉर्ड साहब की जो हिस्ट्री है, पहले तो मैं आपको मीडिया भाइयों को बताना चाहता हूँ, पहले एक हिंदुस्तान के लॉर्ड हैं और एशिया के लॉर्ड हैं जो अपने भारत की आवाज़ को वहाँ बुलंद करते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं, यहाँ के मुद्दों को उठाते हैं। जो हिंदुस्तानी के साथ वहाँ कभी पहले जो कहते हैं भाई हर आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है हिंदुस्तानी को, तो अगर कोई इनके पास पहुँच जाता तो उसके लिए ये बहुत ही दिल से मतलब उनका जो है इनका साथ देते हैं और पूरी पार्लियामेंट में इनकी आवाज़ गूंजती है। हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं ये, ना तो कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये कोई मज़हब की बात नहीं करते, लेकिन पूरे देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं वहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पे देश की कोई प्रॉब्लम है, किसी को इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी का कोई केस है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम भी हो जाती है विदेशों के अंदर, तो लॉर्ड रमी जी मतलब इतना मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की मीडिया से, जो लॉर्ड साहब वहाँ करते हैं। मैंने ऐसा कभी हिंदुस्तान में लोग नहीं करते अपने MP, जो हिंदुस्तान के लिए वहाँ ये करते हैं। आप क्वेश्चन करें जो भी करना। सर, पैनल डिस्कशन में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? पैनल डिस्कशन में जो ये डिस्कशन हुआ था, ये मेन था शहीद इनका जो फादर का था, मेन जो फादर की हिस्ट्री थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब ने अपना बोला, विदेश नीति पे बोला, ज़्यादातर विदेश नीति पे बात हुई है, श्रीलंका पे बात हुई, नेपाल पे बात हुई, पाकिस्तान पे बात हुई, US पे बात हुई, अमेरिका पे जहाँ भी बात हुई, इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन जो हमारा जो मेन एजेंडा था वो था शहीद नानक सिंह, जो मेन एजेंडा था। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा शहीद नानक सिंह से ही एक स्टार्ट होना चाहिए था। उनके लिए थोड़ा सा एक हमें जैसे कहते हैं भाई अपना एक भगवान का नाम हो, वाहे गुरु जी का नाम लेके वो चीज़ हमने स्टार्ट होनी चाहिए थी। जो हमारे संस्कार हैं हिंदुस्तानी, तो वो संस्कार के हिसाब से जो ये काम होना चाहिए था, वो स्टार्टिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपकी मीडिया के सेंस से बताता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले वहाँ पे गुरु नानक, भगवान राम, जो भी हैं हमारे देवी देवता हैं, उनका सबका नाम लिया जाना चाहिए था। उसके बाद उनको याद किया जाना चाहिए था, पूरी पब्लिक उनको याद करती। उसके बाद हम अपने देश विदेश की चर्चाएं करते हैं, तो हमें थोड़ा सा और ये जो बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग वहाँ से होनी चाहिए थी और उनकी हिस्ट्री पर बात होती है। तो आपने मीडिया ने देखा होगा कि जो बातें हुई हैं वो ऐसे हुई हैं जैसे विदेश मंत्री को पार्लियामेंट चल रही हो। यहाँ पे जो विदेश की पार्लियामेंट चलती है ना कि भाई उसमें वहाँ क्या हुआ, वहाँ न्यूक्लियर की बातें हो रही हैं, ये सबको पता, आज का हर बच्चा पढ़ा लिखा है, उसका इससे कोई मतलब नहीं था। ये तो उनकी याद में रखा था, तो हमें उनको याद करना चाहिए, उनकी हिस्ट्री को याद, उनके बलिदान को याद करना चाहिए कि वो कैसे शहीद हुए थे। हम शहीद हुए तो वो शहीद कहाँ हुए थे, कौन सी जंग में शहीद हुए थे, उनके उस पर होना चाहिए। और मैं मीडिया भाई से कहता हूँ, आप लॉर्ड साहब का इंटरव्यू लीजिए, आप उनकी हिस्ट्री चलाइए कि वो शहीद कैसे हुए, कहाँ हुए। कि आज हमने उनका अमृतसर में फरवरी में स्टैचू लगाया था, शहीद उनका भी लगा हुआ है, मदर का भी लगा हुआ है। और लॉर्ड साहब उनकी याद के लिए 7 समुंदर पार से आए हैं, शहीद नानक सिंह जी की याद के लिए तो आए हैं हम यहाँ पर। लेकिन बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम, अच्छा हुआ, सबने अपने दिल की बातें सभी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी सब करते हैं। तो मीडिया वालों को तो वो है कि वो तो निकाल लेते हैं कि भाई कहाँ कमी हुआ, कहाँ अच्छा हुआ। भारत की विदेश नीति का प्रतिपादन करने वाले 3 भारत के राज्य
नाइक, पूर्व में सचिव रहे विदेश नीति विदेश विभाग के श्याम सरन जी, सिब्बल साहब, और नेपाल में भारत के राजदूत रहे जन जी को आज शहीद नानक सिंह मेमोरियल लेक्चर के अधीनस्थ जो सुनने का मौका मिला और जिससे हम सभी भारतीयों का, ना केवल भारत में अपितु विश्व पटल के ऊपर सब भारतीयों का सीना गौरव से फूल जाता है कि जिस प्रकार से आज भारत वैश्विक स्तर के ऊपर, चाहे रशिया हो या यूक्रेन हो, चाइना हो या अमेरिका हो, जिस प्रकार से भारत की कूटनीति को वैश्विक स्तर के ऊपर सलाम ठोका जा रहा है, जिस प्रकार से भारत की कूटनीति को वैश्विक स्तर के ऊपर उसका अनुसरण किया जा रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए लंदन में लॉर्ड रेमी रेंजर, जिनके नेतृत्व में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद विचार धारा के माध्यम से जिस प्रकार से और लाभान्वित हुआ हूँ, मुझे लगता है भारत दुनिया के शिखर पटल पर दुनिया का पहले नंबर का देश बनकर उभरेगा। और उसके लिए मैं अपने लंदन से आए हुए मित्र DK त्यागी, जिन्होंने लॉर्ड रेमी रेंजर जी के साथ मिलकर मुझे लंदन की थेम्स नदी का जल अयोध्या राम मंदिर में अर्पण करने के लिए भेजा था, मैं इन सभी महानुभावों का दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं भारत इसी प्रकार से आगे वैश्विक स्तर के ऊपर बढ़ता चला जाए। Even after partition, his singular idea was that Hindu-Muslim unity should be continued, and partition of India was something which he was dead against. He was trying to protect a group of school children when a communal mob attacked and he was stabbed to death, and he laid down his life and gave the supreme sacrifice for his views, that was unity of India. Ambassador Kamal Sibal is from Government College, Chandigarh. He joined the Indian Foreign Service in 1966. He is a career diplomat who rose to be the Foreign Secretary to Government of India. He was India's ambassador to France, Russia, Turkey, Egypt, to mention a few. He was conferred with Padma Shri by the Government of India for his services to the nation. And presently, Ambassador Kamal Sibal is the Chancellor of the prestigious Jawaharlal Nehru University. Our second panelist is Ambassador Shyam Saran, who joined the Indian Foreign Service in 1970. He is a career diplomat who also rose to become the Foreign Secretary to Government of India. He was our ambassador to Myanmar, Indonesia, Nepal, to name a few, and the High Commissioner to Mauritius. He was conferred with Padma Bhushan for his services to the nation, and he is presently the Life Trustee and President of this wonderful organization, the India International Center. Our third panelist today is Ambassador Jayant Prasad, who joined the Indian Foreign Service in 1976. He is a career diplomat who was our ambassador to Algeria, Afghanistan, and Nepal, and he was also the Director General
of Delhi-based Institute for Defence Studies and Analysis, a think tank under the Ministry of Defence. Our moderator for today's discussion is Shri Hardyal Singh. Shri Hardyal Singh is also from Government College Chandigarh and my senior from IRS, Income Tax. He joined IRS in 1970 and retired as Chief Commissioner of Income Tax, New Delhi. He was Ombudsman for Income Tax in Mumbai. He is a columnist whose columns come in various newspapers, and he is an author whose book came out recently, The Moral Compass, Finding Balance and Purpose in an Imperfect World. Friends, with this kind of a panel, I'm sure the discussions are going to be very intellectually enlightening. I now hand over the mic to Shri Hardyal Singh to introduce the subject and to start the proceedings. Ladies and gentlemen, I'm sure I would be echoing the feelings of all of us on the stage when I say how delighted we are to be amidst you this evening, interacting on a subject of immense importance to our country and which will play an important role in the years to come. The French have a lovely saying, plus c'est temps, plus c'est la même chose, which means basically that the more things change, the more they remain the same. So I recall a very small story, 8 or 9 years old, when we used to watch our black and white television. And I saw a very impressive looking man with a bowler hat. It's true in a way, but not true. Differences. And what has happened is that after the kind of experience we had in Bangladesh and after undergoing sanctions, there is still a lot of mistrust between the two countries. How can we get over this lack of trust, this trust deficit? Ambassador Jayant Prasad. Thank you, Hardyal, and I think you did very well by putting Ambassador Sibal and Ambassador Shamsaran for me, because they have contributed a lot to the. I worked with both of them, with Ambassador Sibal at a time when our relations with the US were just beginning, and then we had constituted what is called a High Technology Cooperation Group, and that developed into what is called the new strategic framework, and that grew into the Indo-US nuclear. From the past to make our future. And the story of my father is very simple. He was a visionary. He could foretell the consequences of religious disharmony. Oh, I'm so sorry. We have Dr. Aman Puri among us, one of the great diplomats who is now posted back to India. So he was a visionary. He could foretell the consequences of religious disharmony. There are many people who want to create further disharmony because they don't learn from the experience of partition when a country was created based on religion. My father warned the then leaders, Muslim leader, not to cut and run, not to fall for the British divide and rule policy, which had become divide and run. If you create a country based on hatred, how will you remove that base? We will never see peace in the subcontinent. Today we are united as one. Tomorrow we will become rival. Our interests will be different, and especially the foreign power, as the most experienced diplomat has said, how the foreign
powers work. In business, people headhunt. In politics, people actually undermine others to surge ahead. There is no way they're going to promote you. It's either you or me. So therefore, there are no such things as friendship in diplomatic interest. It's this vested interest. Today, India is one of the largest market, emerging power, and that is the interest of the other countries. Otherwise, they rather see us struggling. They have surrounded us from this country where they are doing regime change, who are friendly. As the illustrious ambassador said, they were supporting a dictator and a religious country against a secular and democratic India during the conflict with 1971 or 65, whenever. Just shows they talk about democracy, 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 and yet when the chips were down, they were actually trying to undermine India. A secular and democratic country, constitution grants everybody equal rights. Yes? So that just shows the interest. So unless we become successful, our values in the world will not increase. So that's the message I want to bring, that my father said, the unity of India must come and paramount. The second message I want to share with you is the necessity for empowerment of women, because I stand in front of you as a testament to women power. My mother was widowed at the age of 35 with 8 children. Our father's reputation saved us because we could not get on the train, refugee train, and you can imagine those scenes where people were hanging from every corner. But my father's reputation saved her. My mother went to the engine driver, told who she was. Oh yes, I read about him in the newspaper. He was a great man. So he said, look, I can't help you to get on the train, but if you don't mind, sit on the coal tender. So we came sitting on the coal tender, all black, faces black, clothes black. You know, our uncle Firozpur could not recognize who we were. So, but our mother was even told to give children to orphanage. She said no. Because my mother was empowered and educated, she was able to bring up 8 children single-handed. She worked as a teacher. Through immense difficulty and struggle, she brought us up. 5 of our sons became commissioned officer in the Indian Armed Forces, and she became the proudest Indian mother. The same destitute woman became the proudest Indian mother. Her statue was installed this year by the Punjab government next to that of my father in Amritsar. So her life story can inspire other women who are in such challenging situation. My mother's word was, never give up, never give in, no matter what the fate throws at her. Remarkable enough, she not only brought us up, but she instilled the right values in us, which made us assets for India, Mother India, and our adopted country, United Kingdom. Because of her teaching, I became the most decorated citizen of United Kingdom with 8 honors from the Queen. Enough is enough. So, सबको हो गए सब Dr. Lochhan Singh, who has been a formidable leader of the community. So can I have a bouquet to present them? I'll go down actually. Here, and he is the chief guest. बहुत अच्छी debate सुनी हमने. We are wiser after getting all the points from our well-known diplomats. Rami Ranger is a story of success. The Ram Mandir replica, and I collected the holy water of rivers and oceans of 156 countries. गाड़ी में रखे आएगा कि नहीं आएगा? Okay. And do this in